Hello friends, welcome to Flying AFCAT. In this video, we will be discussing last 40 days strategy for AFCAT 01 2023, which is going to held in the month of February, and dates are 24 to 26, I guess, right? So in this video, we will be discussing the strategy. Okay, we will discuss the strategy section wise, और ये जो एफकैट का नया पैटर्न है जो पिछले साल से चलता आ रहा है, ये नया पैटर्न इस तरीके से है कि इंग्लिश में द इंग्लिश सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 30 क्वेश्चंस, right, which will carry 90 marks. So English carries highest marks, right? So reasoning carries 25 questions, 75 marks. Mathematics 20 questions, 60 marks. And GK again carries 25 questions, which is again 75 marks, right? तो ये है नया पैटर्न. हर सेक्शन से टोटल आएंगे 100 क्वेश्चंस और टोटल पेपर है 300 मार्क्स का, राइट? हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ. व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू शुड यूज़ दीज 40 डेज, हाउ यू शुड यूटिलाइज दीज 40 डेज. ओके, सो हम हर एक सेक्शन देखेंगे अभी, राइट? मूविंग ऑन. English carries 90 marks, right? So here I will give you some strategy or tips to score highest marks in English. See, there are 2 points here. One is reading, another one is practice. By reading alone, you can tackle comprehension, close test, right? If you do read every day, you will familiarize with the sentence structures and how to use the words in between the sentences, right? So this is how you will gonna cover the comprehension and clause test, because comprehension contains 4 to 5 questions and clause test contain 3 to 4 questions, right? So 7 to 8 questions are fixed. So if you practice reading every day, तो आपके लिए ये comprehension और clause test easy जाएगा, right? So other part one is practice. प्रैक्टिस क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, राइट, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, you have to cover all parts of speech. What it contains: nouns, pronouns, adverb, adjectives, preposition, conjunction, right? So you have to study every topic. Hardly 1 or 2 hour का एक topic होता है. So you will be able to complete the topic within hours, right? So after covering these parts of speech, what you have to do, you have to do the previous year questions of spotting the errors, sentence completion, fill in the blanks, right? So इस तरीके से you will be able to practice. और जब तुम practice करते हो, if you come across a particular rule, right, you don't need to mug up the rule while practicing. अगर वो rule को कैसे यूज़ किया जाता है, ये अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो ये तुम्हारे मेमोरी में फिट हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू विल एबल टू स्कोर द मार्क्स इन स्पॉटिंग द एरर्स, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन इन 3 चीज़ों में तो यही पूछने वाला है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन क्या आता है. अगेन देयर आर सम रूल्स इन नाउन्स, प्रोनाउंस इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? सो दिस इज़ हाउ. देन बहुत सारे स्टूडेंट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दे सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं, और आई डोंट थिंक सो यू शुड गिव योर टाइम टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, right? Because if you are reading every day and if you are watching content in English, then I don't think कि you will be facing any problems in synonyms and antonyms, right? Idioms and phrases एक बार देख लो, read कर लो और previous year questions करो. The higher amount of questions you practice, the higher amount of marks you will get. It is as simple as this in English. So now I'll tell you 30 में से what should be your strategy to what should be your figure to score. So I'll suggest you कि 24 to 25 attempts are good attempts, right? C, you don't need to take risk. There is minus marking, right? -1 mark. So you should always be very sure while attempting questions in English, because see, it's very hard to get 100% accuracy in English language, right? So I would suggest you कि 24 to 25 questions should be your target figure. If you're sure, if you're 50% sure, then it depends on you if you have to take risk or not, right? So मेरे ख्याल से 24-25 questions are right attempt in English. Okay,
Let's see the next section. The highest amount of accuracy you can get in any section is the reasoning section. Okay, so there are some topics you can see, you can read: analogy, series, classification, coding and decoding, direction, sense, taste. These are the topics, right? और ये अलग पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग का. ये वर्बल में आती है और ये नॉन वर्बल में आती है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन एवरी डे. हर एक टॉपिक के 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगाओ. और आई वुड सजेस्ट यू कि नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कि क्योंकि सम ऑफ द टाइम्स 3 और 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि दे आर अ लॉट ऑफ, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस. By practice you can score out of marks in this section, these reasoning sections. Okay, so कोई भी बुक उठा लो रीजनिंग की और प्रैक्टिस करते रहो जब तक एग्ज़ाम है. मतलब 40 डेज अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन गेट 90 above 90% accuracy in this section, right? You can even get 100% accuracy. तो यही तो सेक्शन है कि जो मतलब हर कोई इसमें स्कोर कर ही लेता है. नाउ योर टारगेट शुड बी टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स, राइट? तो ये तुम कर लोगे. आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन, राइट, विथ एक्यूरेसी. Let's move to the next section. Next section is mathematics, right? Mathematics carry 20 questions. मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. दे आर फेवरेट चैप्टर्स ऑफ एफकैट सी डैक, राइट? सो इट इंक्लूड्स परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क. ये चैप्टर में से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस, राइट? और जो लेवल होती है मैथमेटिक्स की वो ईजी टू मॉडरेट होती है, राइट? ईजी टू मॉडरेट. तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो. क्वेश्चंस आर मॉडरेट and you can easily score good marks in this section, right? All you need to do is to just, if you're doing percentage, write down all the formulas, learn the formulas, and try to do as much as questions as possible. If you do practice every day mathematics, if you're giving 2 or 3 hours for mathematics is enough to score, right? My advice would be to score around 15-16 questions. You, if your accuracy is high, if you have covered all the topics, then you can even attempt 18 to 20 questions. But I would say कि 15 to 16 are safe score. If you are attempting this with accuracy, then you are at a good position, right? Let's see the next section. General awareness. In general awareness, there are 25 questions. And how to tackle this section particularly is, you can साइंस स्टैटिक आती है, राइट? ज्योग्राफी बहुत स्टैटिक आती है. इंडियन पॉलिटी लास्ट टाइम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए थे. लेट्स सी इस बार क्या आता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टैटिक इन नेचर, राइट? सो दिस इज एंड इन पर्टिकुलरली इन एफकैट दे गिव अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस टू स्पोर्ट्स, राइट? स्पोर्ट्स एंड डिफेंस. स्पोर्ट्स एंड डिफेंस से मिलके ही पास 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सी, राइट, कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस एंड स्पोर्ट्स इन एफकैट. So see, to able to score good marks in general awareness requires a lot of time. और हमारे पास सिर्फ 40 days है. In these 40 days we have to focus on other 3 sections except general awareness, right? इसका मतलब ये नहीं कि जनरल अवेयर्स को इग्नोर करना है, राइट? यू हैव टू कवर स्टैटिक पार्ट, राइट? ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, you these topics you can cover from lucent, right? You don't need to for polity you don't need to read Lakshmikant or geography NCERT, because the nature of exam of GS in FCAT is static, right? lucent से हो जाएगा. What you need to do is to practice questions, that's it. So in these 40 days I would suggest you कि focus on English, mathematics and reasoning, right? These 3 sections should be your priority and general awareness should be your last priority. So if you're out of 25, if you're scoring, if you're attempting, right, 15 or 20, 15 to 20 questions with accuracy, then it is more than enough. I would say it is more than enough. Let's sum up our strategy. Our strategy is to focus on 3 sections, right? English, then comes reasoning, then comes maths. These 3 sections should be our priority,
and then the static part of GK. That's it. In addition to this, you can do current affairs, right? If you have time, but we have only 40 days. So in 40 days, we have to practice a lot of questions of English, reasoning, and mathematics. If you're doing this every day, you will be able to score good marks, right? तो याद रखना, out of 100 your target should be to attempt 80 questions with accuracy. Accuracy matters here, okay? जो मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था FCAT का, उसमें मैंने सिर्फ 66 अटेम्प्ट किए थे, एंड यू विल बी सरप्राइज आई क्लियर्ड एग्जाम, राइट? Why I cleared? Because my accuracy was there. So now our target is to attempt 80 questions with accuracy. See, if you attempting 80 questions, it means that if all of the questions are correct, then 240 marks, right? So if you follow this strategy in these 40 days, you will be 100% scoring above 200 plus marks, right? तो ये है, तो लग जाओ. We have 40 days in hand, and if you utilize these 40 days, you will be definitely clearing the exam, okay?